Dear students, Indu Sharma presenting to you the lesson Ram Lakshman Parshuram Samvad Part 2 Class 10th Course A CBSE. It is written by Tulsidas ji. It is written by Tulsidas ji. Tulsidas was born in Rajapur village in Pavada district of Uttar Pradesh. Tulsi's childhood was struggling. In the early year of life, his parents became, he lost their parents. It is said that he got the path of Ram Bhakti from Guru Kripa. They were worshipper, poets of human values. Tulsi is incomparable in Ram Bhakti tradition. His major compositions are Ramcharitmanas, poetry, Geetavali, Dohavali, Krishna Geetavali, Vinay Patrika, and Vinay Patrika. Students, in the first part you read that Ram and Lakshman were coming to the court of Mithila Nagari, King Janak. Sita will be married to the person who break the bow of Shiva. According to the condition, Sri Ram broke the bow. Listening to the voice of bow, Parshuram came to the meeting and started talking with Ram Lakshman and got angry. Sri Ram was quietly listening to him. Lakshman couldn't stay silent due to his playful nature. The atmosphere of the court was becoming a bit hot. Let us hear ahead of the conversation in part 2. कोसिक सुनुहु मंद येहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु भानु बंस राकीस कलंकु निपट निरंकुसु अबुदु असंकु काल कवलु होई ही छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहू जो चहु उबारा कही प्रतापु बल रोषु तुम्हारा लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अच्छत को बरनई पारा अपने ही मुँह तुम आपने करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोष न पुनि कछु कहू जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु वीर व्रती तुम और तुम धीर अछोबा गारी देत न पाहु शोभा सूर समर करनी करही कही न जान जना वही आयु आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। जब जनक दरबार में
वातावरण काफी गर्म हो गया। परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच काफी कहासुनी होने लगी। और इसी बीच में विश्वामित्र जी से परशुराम जी बोलते हैं। वे कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं कि बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। So when the atmosphere gets warm, cause of the conversation of Parshuram ji and Lakshman, then the Parshuram said to the Vishwamitra, hey Vishwamitra, this child is very stupid and cooked. He is the stigma of the moon in the form of the Sun dynasty, that he is becoming fatal to his clan due to time. He is absolutely clumsy, foolish and fearless. It will become a waste of time in just a moment. I am calling out and saying that little my fault will not be there. यदि यह मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष ना देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर समझा दो। If he is die, then do not blame me in any way. If you want to save it, then explain. If you want to save him, then explain him by telling about my majestic force and anger. यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार से किया है। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो दोबारा कुछ कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। Hearing all this, Lakshman ji said that, O sage, who else can describe your success in your life? You have described your actions with your own mouth many times in many ways. If you are not satisfied, even after saying this, then say something again. Do not bear your unbearable suffering by holding your anger. You are about to wear the vow of valor. You are patient and calm. Abusing doesn't suit to you. शूरवीर युद्ध भूमि में अपनी शूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं बताते। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। Knights introduce themselves by performing their heroic deeds in the battlefield. Don't tell
yourself seeing the enemy in front of him on the battlefield. Only cowards brag about their majesty. So students, let us something know about Vishwamitra. Who was Vishwamitra? Vishwamitra was a famous sage yogi of the Vedic period. Sage Vishwamitra was a very majestic and brilliant great man. Before becoming a sage, he was a very mighty and people-loving king. Vishwamitra ji learned from his penance that the incarnation of Parbrahma Shri Ram, who saved the universe from fear, has taken place in Ayodhya. Then to protect his yajna, he brought Shri Ram to demand on Maharaj Dashrath. Vishwamitra's worship was protected by Shri Ram. He imparted his knowledge to Lord Shri Ram and got him married to Mata Sita ji in Mithila. Maharishi Vishwamitra was a symbol of lifelong manhood and penance. They are still present in the Saptarishi Mandal universe in the sky. तुम तो काल कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरो कर घोरा अब जनि देई दोसु मोहि लागू कटुवादी बालकु बद जोगू बाल विलोकी बहुत में बाचा अब येहू मर निहार भा साचा कोसे कहा छमी अपराधु बाल दोष गुण गनहीन साधु खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे न तो ये ही काटी कुठार कठोरे गुरही उरिन होते श्रम थोरे गादी सुनो कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ आय में खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी और भी क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप तो जैसे ही बार बार आवाज लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयानक फरसे को संभालकर अपने हाथ में पकड़ लिया फरसे को संभालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे अब लोग मुझे दोष ना देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, किंतु अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अब इसे मारने से कोई नहीं बचा सकता। After hearing the harsh word of Parshuram ji, Lakshman got more angry, and Lakshman ji said, "You are calling death for me by making repeated voice." Hearing such harsh words of Lakshman ji, Parshuram ji took hold his terrible axe and held it in his hand, and starting saying,
that now people do not blame me. A child who speaks this bitter word deserves to be killed, considering as a as a child I saved a lot, but now he has really come to die. Now no one can save him from killing by me. विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन बालकों के दोष और गुण नहीं गिना करते। परशुराम जी बोले कि मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। Vishwamitra said, forgive the crime. Gentlemen, do not count the defects and virtues of children. Parshuramji said that in front of me without mercy and anger. This child is giving a hostile answer. Despite this, I am leaving him without killing. O Vishwamitra, only because of your calm nature and love. Otherwise, I would have been free from the debit of the Guru with a little effort by cutting him with this hard axe. Students, little bit explanation here. Parshuram was given by Lord Shiva to keep the bow which Ram had broken during Sita Swayamvar. Due to this, Parshuram, considering himself and Lord Shiva as an insult, had spoken ill-tempered to the Kshatriyas in the Raja Jana court. Lakshman had opposed this with anger and sarcasm, due to which Parshuram called Lakshman a traitor. Explanation. Students, here Tulsidas ji has compared Shri Ram and Lakshmana with Mini Mithi Khan. विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहा, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। वह सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे से बनी हुई खांड है। यह कोई ऐसी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। खेद है, मुनि आप भी ना समझ हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। Explanation. Students, here Tulsidas ji has compared Shri Ram and Lakshman with Mithi Khan,
According to him, here Tulsidas has compared Shri Ram and Lakshmana with Mithi Khan. According to him, Shri Ram was not only the beloved king of all the peoples of Ayodhya, but he was also very harsh for the tyrants. That is why in these lines he is called the sugar of iron. Khand is a coarse powdered form of sugar which dissolves as soon as it enters the mouth. विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में हंसकर कहा, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। वे सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहे से बनी हुई खांड है। यह कोई ऐसी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। खेद है, मुनिया भी नासमझ है, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। Vishwamitra laughed in his heart itself and said that the sage is feeling green everywhere. Means he was happy. Parshuram is happy itself always, being victorious everywhere. Ram and Lakshman are also being considered as ordinary Kshatriyas, but this is a sugar made up of iron. This is not a piece that it melts in the mouth as soon as it's taken melt. Sorry, sage is still mindless, not understanding their effect. कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोची बड़ जी के। जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कभू सुभट ग्रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लागू पुकारे, रघुपति सै नहीं लखुन निवारे। लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोपु क्रसानु। बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण और परशुराम जी में क्रोधाग्नि शब्दों के द्वारा निकल रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता। यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए। अब गुरु ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है। The hard words are continuous using in the conversation of Parshuram ji and Lakshman. So Lakshman says to the Parshuram,
Lakshman ji said, "O sage, best, you are the best. Who doesn't know your calm nature? It is famous all over the world. You are well freed about from the debts of your parents. Now the debts of Guru remains. The thoughts of which was disturbed your mind a lot." वह मानो हमारे ही माथे मढ़ा था। बहुत अधिक दिन बीत गए। बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप किसी कारण हमारे अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। मैं तुरंत ही थैली खोलकर पूरा हिसाब चुका दूं। It was if just on our own forehead. That means this blame is for us, means Ram and Lakshman for whole life. Due to the passage of many days, the interest on us must have increased a lot. Now if you call any accountant, then I will immediately open the bag. Open the bag and pay the full amount. लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। Hearing such harsh and bitter words of Lakshman ji, Parshuram ji handled the axe and the whole assembly cried out loudly. लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले। ये ब्राह्मण आप घर में ही बड़े हैं। Lakshman ji said continuously, "O Lord, you are showing me the axe again and again. But, O enemies of kings, I am saving you as Brahmins. You never get strong, brave warrior. O Brahmin deity, you are the eldest in the house only. You are the brave warrior in the house only." आप घर में वीर योद्धा हैं। यह सुनकर सभी लोग सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, यह अनुचित है, यह अनुचित है। Hearing this, everyone present in the meeting started saying, "This is inappropriate, this is inappropriate." उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य
श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले मधुर वचन बोले। At the same time, Shri Ram Raghunath ji stopped Lakshman with a gesture of his eyes. Lakshman ji's answers were like an offering, like fire. He spoke very rudely. Seeing the rising fire of Parshuramji's anger, Sri Ramchandra ji of Raghukul spoke sweet words that calmed him like water. Then after, Parshuramji also got cool, and he knew the power of Sri Ram and Lakshman. So students, this is the last and second part of the lesson chapter 2, Ram Lakshman Parshuram Samvad. If you like my video, I hope you like my video, and if you like my video, then please share, like and subscribe. And if you have any query, and also if you want the translation of questions in English, then please ask me, comment me in comment box. Thank you.